લૉજ વડોદરા, રોહિત લૉજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લૉજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના કર્ણાટક, મધ્યપ્રદેશ ફેડરેશન, કન્નડ ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન સેવાનો માર્ગના વક્તા સંધ્યાજી, ચૈત્રજી તેમજ ડોક્ટર લીલા જોશીજી અને આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. સભાની શરૂઆત કેશોરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશોરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. ફેડરેશન, કન્નડ ફેડરેશન, મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન સેવાનો માર્ગના વક્તા સંધ્યાજી, ચૈત્રજી તેમજ ડોક્ટર લીલા જોશીજી અને આજની સભાના મોડરેટર શ્રી યસ અતુલભાઈ. યસ, ખૂબ ખૂબ આભાર કેશોરબેન. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. तरल आपનું स्वागत है। थैंक यू सो मच। और बिना समय गवाते हुए संध्या जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पार्ट 1 इंग्लिश में कहें और उसके बाद हम फिर कन्नड़ा में चैत्रा जी के पास मूव होंगे और फिर आज सेवा की मूर्ति जिन्हें की मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है, वो भी आज हमारे बीच है, तो वो भी सेवा का एक संदेशा देंगे। First and foremost, I'd like to thank Taral Munshi ji for giving me this opportunity. Because of that, I could read what our third international president, G.S. ARUNDALE, had written. One, I think I can say it's a pamphlet, I think so. The Way of Service, and it has been dedicated to Alkon or Alcyone, whatever you say. And it has been mentioned in whom the spirit of service shines out undimmed. The spirit of service shines out undimmed. That is what has been written. And today, let us try to understand a few hints on the art of service which have been gathered, and he writes, gathered from elders. And even in Buddhism, they say that, thus I have heard. There is nothing like I. Okay, so he very clearly writes us that everything has been gathered from his elders. Then we can try to follow these hints. He has given so many hints to how to serve and come out sometimes successfully, more often unsuccessfully. Very few times, whatever the service that we render, only that satisfaction we will get, but majority of the times we lose. Sharing these points so that one can learn how to serve. How to serve. It is not just service, how to serve is also there. If we have the desire to serve to others, it has to be an advantage to them and without danger to ourselves. The person who gets the service from us should be benefited. It should be an advantage to that person. And at the same time, it should not danger ourselves also, not at our cost. We have to help, but simultaneously we should know. There are 3 principles guide us in our service. That our greatest joy is to thread the path of service. When we thread the path of service, we will get joy automatically. That we know ourselves to be but the agent of some force greater than our own, which sends the power of service through us. So that means to say we are all channels for the higher forces, what we get. During anniebesant's time, even he was also during that time only. So there was a wing that is known as band of service.
Now, how we are having Mystic Star or Round Table like that, during the time Band of Service Wing was there. So all of us are a channel in which we can serve. That we see in others, the same divine nature we ourselves possess. This is what our Theosophical Society also says, brotherhood. From where? To form a nucleus of a universal brotherhood means same divine nature is there everywhere with me, with one mineral or with one plant or with one animal, human being or superhuman being. Everywhere, in everything, that one divine nature is there. We should not allow the force of our affection for another to disturb either our balance or others. Our service must strengthen and not weaken. These days, mothers and children, we can say, mothers is always unselfish service only. But simultaneously, what's happening is the children will never learn. They are becoming more and more lazy. And these days, only one child. So they pamper to their maximum extent. That should not be happening. No extremities. We have to show our affection. At the same time, we should have balanced mind. We should not be jealous of others' greater power of service. Rather, be glad that greater power exists to help those whom our own weaker forces may be unable to reach. Whatever the power that we have, that is weak. But when the other person renders service, we should really feel glad. At least that person is capable of doing that service in which I am weak, which I cannot render that service. So that thing should be there in our mind. When we give, we should not expect the recipient to keep the gift for himself alone. We have to rejoice when the gift which has given him happiness makes glad another also. It's mere common sense which we have to implement. Then he writes, we should not look for the fruit of our services, nor feel unhappy when no words of gratitude come from others who got help. We always expect, no, this is what even in Gita, Sri Krishna has also mentioned, Karmanye vadikaraste ma phaleshu kadachana. Our duty is to do only the karma, only the service. We should not expect any results from the service which we have rendered. So the expectation of the result, seeing the fruit of our service, even small desires we have got, even all those things we should not have. Why? Means it is the soul we serve and not the body. And we may always see the gratitude of the soul, though the lips remain silent. We are serving to the another soul. Soul is there in each and everything. It's not only in human being. In human being, individual soul is there. In animals, plants, group soul is there. So we are serving to the soul, not to the body. Body means only the personality, where all our lower things exist. But we are serving to the soul, to the higher. We should never look for affection from those who we love. If our love for them is true, sooner or later, it will enter their hearts and call forth response. Means like wherever if we keep sweets, automatically ants will get attracted and it will come to eat that sweet and to take along with it. That's how it is. So we should not never look for the affection from other person whom we love. At the same time, he writes, remember that no one can truly serve who has not begun to gain control over himself. That control over oneself is very much required in this service, because always our mind is very disturbed, I can say. It goes here, it goes there, and it goes in all the different directions. It can go in, it can take any turn whenever it wants. Because of that, we develop duality. We feel like serving this person, or we feel like giving something to that person. But our mind says to give, at times it says not to give. Because of that only, our all majority of our spiritual energy is
there, that will get drained. It should not happen. So we should always have a controlled mind, balanced mind. That is why it is very much required to the person who wants to serve or would like to serve. The best service is that which makes the burden light, not that which takes it away. The other person's burden should be reduced. Each one has to finish their own prarabdha karma. If we know, so we will do, and we will take away the thing. No, we should help them to enhance so that they can be independent. That is what is very much required. There are as many ways of service as there are people in the world to be helped. There are as many ways of service. It is not one way or two way. How many people exist in this world? That many types of services are there exist, and it is there in the world. The time for service is every moment of the day, for though they may not always be occasion for a kindly action, there is always occasion for a kindly attitude. Even our attitude matters a lot. And the service is not that morning or evening or after office hours or only during weekday, nothing like that. Service is there every moment. We can serve every moment. That is what he has gathered. The less a person thinks about oneself, the more he is really paying attention to one's growth. So there is no personality or selfishness. Each little act of service returns to the doer in the shape of an added power to serve. We will get more confidence, and we will be doing it in a more and more in a bigger way. This is what, but we have to start from the small act, little act. Then when the big thing comes to us, we will be capable of handling that work also. If a person rejects the way in which we wish to serve him, so we have to try and find out another form of service. The main aim is our desire to serve him, not to dictate to him the way in which he must be helped. Majority of us do that. We dictate, this is how it should be. If you want me to serve, you have to do in this fashion only. We put in terms and conditions. That should not happen. We should not dictate. We have to find other ways and means to serve, not to dictate. We should not be too shy or hesitate to offer our help to anyone in need, whether we know that person or not. At times, so many times, we feel shy, whether I'm capable of doing it or not, or why should I do, or somebody will do, or I don't know. That hesitation, somewhere, something, that hesitation is not there always, but at times we feel shy also. That should not happen. We should not say to ourselves that I have given much help to others today. Rather, think how little I have really done to lessen, means reduce all the misery and trouble in the world. We see only in the micro level, not in the macro level. When we see the world, entire world, how much ever that we have worked today, it is not more or much. It is again very, very little, a tiny part of the help only that we have rendered. When we think that I am better than others because I am learning to serve and they apparently are not, in that moment we cease to serve. Then he says, true service consists in sharing our life with another. True service consists in sharing our life with another and not in pointing ourselves out to others directly or indirectly as an estimable examples. Majority of us are doing the same thing. A person's capacity to serve well can only be judged by the way in which he leads his ordinary home life. The person's capacity to serve well
can only be judged by the way in which he leads his ordinary home life, not by the books he has written, nor by the reputation he enjoys, nor by his public speeches or public actions. It is not great public actions which make the great man, but the small daily acts of self-denial which perhaps nobody notices. A person may ask service from us in many ways, but we will serve him best by giving him which he needs and not that which he wants. So we have to discriminate need or greed. We should try to put our service in a way which makes it acceptable to others. If we dictate, it is not acceptable to others. So we should make it very, very clear. There is no one in the world who does not need something, and there is no one in the world who cannot give something. Very true, no? When we are serving someone, we should not become impatient of their weaknesses. Their weaknesses only have given us the privilege to serve them. Otherwise, if they would have been strong, then the question of service doesn't arise. Because of their weakness only, we are capable of serving that person. A little help actually given from our own existing resources is worth more than the thought of how much better we would have served if our resources were greater. If I would have had lakhs together or crores together, then I would have given. It's not like that. Whatever the little that we have, that's enough to share with the other person who is in need. The way to test, even the testing is also there. The way to test the value of our daily service to others is to notice whether we are day by day growing more peaceful, more contented, happier, and more tolerant. If we are doing all that we can, then we are doing all that we ought to. We should never allow a person's rejection of our offer of service to be an excuse for refusing any further help. That is also an escape. When once we have served as wisely, because in At the Feet of the Master, it's very clearly mentioned, only a wise person can be wisely helpful, and we have to do wholeheartedly, not off and off. That's why it's mentioned here. When once we have served as wisely and as wholeheartedly as we can, we need not be anxious about the result. For the purity of our service returns in blessing to the server and surrounds with blessing the person served. Thank you. Right. Well in time. Absolutely well in time. And now I will just request Chaitra ji. Namaste. Namaste. Namaste, sir. Thank you for giving me this opportunity. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ತರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು G.S. ಅರುಂಡೇಲ್ ಅವರದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದಿಂದ ನಾನು ಕೆಲವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ G.S. ಅರುಂಡೇಲ್ ಅವರು ಅವರಿಂದ ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ 1919ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಆಲ್ಕೋನಿಯನ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋನಿಯನ್ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I whom the spirit of service shines out dimmed, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಲ್ಕೇನಿಯನ್ಗೆ ಸೇವೆಯ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ ಮಾಡದೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಇಂದು ನಾವು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸೇವಾ ಕಲೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೇವಾ ಕಲೆ ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಅವರು ಈ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ,
ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ಅವರು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿಯಲು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅಪಾಯವಾಗದೆ ಅಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಮೊದಲನೇ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ 3 ತತ್ವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 3 ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು, ನೀವು ಸೇವೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತುಳಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೆಯದು, ನೀವು ಆ ಸೇವೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಸೇವೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರಿವು ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೀವು ಇತರರಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೀರಾ. ಇದು 3 ತತ್ವಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಮತೋಲನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಾರದು, ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡಬಾರದು. ಪಡುವ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುರ್ಲಭ ಶಕ್ತಿಯು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ವೋ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕೆ ಹೊತ್ತು ಅಸೂಯೆ ಪಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಂತೋಷ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ನೀಡಿದಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಫಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಡಿ. ನೀವು ಏನೋ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಫಲವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದುಃಖ ಪಡಬೇಡಿ. ಅವನಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರೋ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಅವನಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಇದು ಸೇವೆ. ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದೇಹಕ್ಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನವಿದ್ದರೂ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಸೇವೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದೇಹಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಅದ್ರ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಂದ, ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹುಡುಕಬೇಡಿ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಮಗೂ ಬೇಕಂತ ಹುಡುಕಬೇಡಿ. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಅಥವಾ ನಂತರ ಅದು ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೇನೋ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನಪಿಡಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯು ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕುವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯು ಏನಾದ್ರೂ ಭಾರ ಇರೋದನ್ನ ಲೈಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಸೇವೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆಯ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದಯೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದಯೆಯ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂದರ್ಭವಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಸೇವೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯು ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಅವನು ತಿಳಿದಿರಲಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿದೇ ಇರಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಂದು ತುಂಬಾ ಇತರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಇನ್ನೂ ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇತರರಿಗಿಂತ ನಾನೇ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಸೇವೆಯ ಅದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಸೂಚಿಸುವುದಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಅವನ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಆನಂದಿಸುವ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೆಲಸಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲ. ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ನಿರಾಕರಣೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿನಯಲ್, ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಸಣ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾಡುವ ದೈನಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅದು ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಇರಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನನ್ನಾದರೂ ನೀಡಲು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಕೆಲವು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹನೆ ಪಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳೇ ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸವಲತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಸೇವೆಯೇ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಿದ್ದೀರಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸೇವೆ फर्स्ट हाफ फिनिश करने में 2 मिनट्स. हाँ ओके अभी फिनिश नहीं हुआ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಇದಾಯ್ತು. ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸೇವೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿಯಾಗಿರೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೃಪ್ತವಾಗಿರೋದು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿಷ್ಣುತರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೇವೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. Thank you. Thank you so much. Ekdam right time and you have wonderfully, though it was first time, but you have wonderfully done the simplification to the subject. And now I will invite Dr.LEELA Joshi ji. So please go ahead with your first half all in Hindi. Thank you. सबको मेरा नमस्कार। आज जैसा हमें मालूम है कि हम अपनी साप्ताहिक त्रिवेणी संगोष्ठी में चर्चा कर रहे हैं सेवा मार्ग, जिसमें चलना अपने आप में एक कला है। हमने इंग्लिश में प्रिय संध्या जी को सुना, कन्नड़ में प्रिय चैत्रा जी को। अब मैं उसी का हिंदी अनुवाद आप लोगों के सामने रखने का प्रयत्न कर रही हूँ और हो सकता है उसमें बहुत त्रुटियां हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसमें मैंने देखा कि डिजायर टू सर्व, यदि हमें सेवा का भाव आ गया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर हम उसको मूर्त रूप में न भी कर सके, हम उसको प्रैक्टिस में नहीं ला सके, पर वो जो सेवा भाव द डिजायर जो हुआ है उससे ही जो पॉजिटिविटी फैलती है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद उसमें 3 प्रिंसिपल पॉइंट्स बताए हैं। इस सबसे बड़ी खुशी तो पहला कदम रखने पर ही मिल जाती है और इसके बाद अपनी बात जब दूसरे पर जाती है उस जो पावर आती है ऊपर से उसके कारण वो एक बहुत अद्भुत चीज है। उसी ऊपर के पावर से ही हम कुछ विचार करते हैं और फिर उसको मूर्त रूप में रखते हैं। तो मुझे याद आता है कि रहमान का देनहार कोई और है, भेजत है दिन रेन, लोग भरम मुझ पर करे ताते नीचे नैन।
तो ये ऊपर वाला पावर भेजता है। जब हमको डिजायर आती है, हम कदम रखते हैं, कदम रखने का भी पावर ऊपर वाला आता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये टोटल चीज। तीसरा उन्होंने बताया कि दूसरों पर भी जब हमारी उस शक्ति का प्रभाव पड़ता है तो हमें वो एहसास होने लगता है अपने पावर का और दूसरे के पावर का भी। इसके आगे कई पॉइंट्स हैं, उनमें जिस तरह से है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। आपके अफेक्शन ऐसा हो वह कि आपका और दूसरों का भी बैलेंस डिस्टर्ब न करें, नहीं होता, बल्कि उसका पावर बढ़ाने का होता है। इसके बाद जब ये जब क्रम चलता होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, किसी को ज्यादा हो गया इसलिए जलन भी करना उचित नहीं है। और जब आपके द्वारा किसी को कुछ मिला, उसने भी उस मदद का जो लाभ है वो दूसरों को आगे आगे सरकाया, दूसरों को मिला। तो ये एक विस्तारिता जो होती है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अब आपने जो किया है उसके फल की इच्छा न रखें। ये तो हम सब खूब अच्छी तरह से जानते हैं, गीता में ये बहुत विस्तार से हर चीज का। और हम अगर किसी ने शब्दों में हमको धन्यवाद नहीं दिया तो उससे नाखुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने शरीर नहीं, आपने तो आत्मा की मदद की है। और ये सूनर और लेटर आपका को आभार इसका जरूर महसूस होगा, भले ही वाणी से, लिप से हमको धन्यवाद नहीं मिला। तो ये इससे नाखुश होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि उसमें मेंशन है। कभी भी जिनसे आपने सच्चा प्यार किया है, क्योंकि सेवा प्यार है और प्यार सेवा है, कभी भी जिससे आपने सच्चा प्यार किया है उनसे अफेक्शन आपको इमीडिएट नहीं भी मिले तो निराश न हो। कभी न कभी उनकी दिल की आवाज आपके लिए पहुंचेगी ही सही, पॉजिटिव वे में। हमने किसी की जरूरत के हिसाब से इमीडिएट अगर किसी को मदद की है तो हमको उसको इतना विस्तारित करके, एक्सप्लेन करके या कुछ ज्यादा करके उसको ज्यादा क्या कहना चाहिए कि दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेकी कर और दरिया में डाल, जो है कहावत, वो बिल्कुल सही इसमें बैठती है। जैसा कि बताया मेरे पहले वक्ताओं ने बताया है, आदरणीय संध्या जी ने काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है इसको। सेवा के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, जितने लोग उतने ही तरीके, लेकिन टाइम और मौके बार बार नहीं आते। इसलिए टाइम और मौकों का अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आप समझे कि वो नहीं आते हैं। आपको तुरंत कर देना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरी उसमें जो है। और एक और बात की सेवा की हर समय हर मौके को, और अगर समझ कर सेवा कर रहे हैं तो आपके अपने बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं मिलता। वो अपने आप में एक प्रोग्रेस की सीढ़ी है, जब आप अपने बारे में नहीं और दूसरों के बारे में सोचते हैं। क्योंकि हर सेवा का काम जो हमारे द्वारा हुआ है उसको करने वाले का वापस लौटता है, ये उसकी इंक्रीजिंग पावर से मालूम होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं ना, आपसे हमको प्रेरणा मिली, तो वो आपके पावर इंक्रीज हो जाती है सेवा करने की। और अगर यदि आपकी
सर्विस, आपके सर्विस की मदद किसी को नहीं चाहिए, तो उसे आप किसी और दृष्टि से न देखें, आप दूसरे प्रकार से उसकी सेवा कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि कई वक्त हम बहुत झेपते हैं, अरे मैं उसको ऐसा मदद करूंगी तो करूंगी या करूंगा जो भी है, तो वो पता नहीं इसको कैसे, हाउ दे विल टेक इट। ऐसा कभी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। किसी को मदद करने में आपको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, शर्मिंदगी नहीं महसूस नहीं होनी चाहिए। यह भी ना सोचे कि मैंने उसे कितना कुछ दे दिया, कितना कुछ कर दिया उसके लिए, बल्कि उल्टा आपके मन में ये विचार आना चाहिए, क्या मैं कुछ और भी कर सकता था या कर सकती थी। मतलब एक आई की भावना, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, वो आई की भावना नहीं आनी चाहिए। और यदि आपने ये सोचा कि आप दूसरे से अच्छे हैं, क्योंकि आप सेवा का मार्ग लिया है आपने, या आप सेवा करना शुरू कर रहे हैं, या आपने सेवा करनी सीख ली, तो यहीं पर आप समझ लीजिए कि वो सब बेकार हो गया। क्या हुआ, जहां आई नहीं होना चाहिए। और एक दूसरे से शेयर करना से ही ट्रू सर्विस होती है। अगर हम अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, तो हम डेफिनेटली अपने को कुछ सुपीरियर भावना आने लगती है, तो वो बहुत सही बात नहीं है। इसके बाद एक व्यक्ति कितनी अच्छी तरह से, यानी उसकी सर्विस करने की कैपेसिटी कैसी है, ये उसकी दिनचर्या से मालूम हो सकता है, उसके रहन सहन से मालूम हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसको बहुत पब्लिसिटी मिली है, या उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत हाईलाइट है, और बहुत लिखा है, बहुत कुछ है, ये नहीं। साधारण करने वाले, दे आर द रियल सर्वर। कभी कभी क्या होता है, आप सर्विस दे रहे हैं और लेने वाला किसी अलग प्रकार की सर्विस आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है, पर यहाँ पर आपको ही निश्चय करना है कि उसको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, और आप उसी डायरेक्शन में उसकी मदद करें। जो भी सेवा आप उसकी दे रहे हैं उसको भी तो मान्य होना चाहिए। हो सकता है उसको किसी और चीज की जरूरत है, वो किसी और चीज तरह से हमारी मदद एक्सपेक्ट कर रहा है, और हम किसी और तरह से उसको मदद दे रहे हैं, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑन आइदर केस। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे कि किसी चीज की जरूरत ना हो, और ऐसा भी कोई नहीं है कि आप किसी को कुछ देने के नहीं दे सकते। आप दे भी सकते हैं, और लेने वाला लेगा जिसको जरूरत है। सेवा देते समय उनकी कमियों पर अधीर नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। उनकी कमियों के कारण ही तो वो हमसे मदद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम उसको नाराज होते हैं, या हम अपना बैलेंस खो देते हैं, तो ये सही नहीं है। छोटी मदद आपके ही रिसोर्सेस द्वारा जो दी जा सकती है, वो मदद वही मदद करनी चाहिए। आप सोचे कि मेरे पास कुछ और होता, मैं कुछ और कर सकते, मेरे पास इतने पैसे होते, मतलब ये तो आपका ही नेगेटिव पॉइंट है। आपके जो जो रिसोर्सेस हैं, जो आप कर सकते हैं, वो आप करें। अब उसमें ये भी है कि आप अपनी सेवा के लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं, इसके क्या लक्षण होंगे, या आप जहां से शुरू किया वहीं पर है, या आगे बढ़े हैं। इसके लिए उसमें कहा गया है कि आप
दिन पर दिन क्या शांत हो रहे हैं? आपकी बेचैनी जा रही है? आप संतुष्ट हैं? ठीक है। मेरा तो वैसे ही बहुत कम है। संतुष्ट हैं, खुश हैं, सहनशील हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपनी सेवा के कार्य में सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी इसकी सेवाएं नहीं ले तो आप उसको ये नहीं समझे, ये एक्सक्यूज ना अपने आप में ले लें कि इसको मेरी जरूरत नहीं है। हो सकता है उसको किसी और उसमें आपकी जरूरत हो। अगर आपने दिल से सही सेवा दी है तो आप फल की कामना न करें। आपको जो आशीर्वाद मिलता है ऊपर से, साइड से, ऑल राउंड जो आशीर्वाद मिलता है आपको भी, और द टेकर, द वन हु टेक्स योर सेवा, उसको भी आपके चारों तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, हमारा सौभाग्य है कि आप जो सेवा की मूर्ति है वो हमारे सामने आकर सेवा की बात कर रही है, लेकिन हमें बहुत कुछ सुनना है। अभी हम पार्ट 2 सुनेंगे संध्या जी से, और फिर अंत के में आपसे बहुत सुनेंगे। संध्या जी प्लीज कंटिन्यू विद पार्ट 2। थैंक यू। सो फ्रूट के बारे में हम लोग थोड़ा सा बोले, सोचे, किए। The ideal reward of service is an increased power to love and therefore to serve. The ideal reward of service is an increased power of love and therefore one has to serve. A person who is not truly happy cannot truly serve. Service के लिए happiness तो होना ही चाहिए, because only a person who is contented can be happy. Otherwise, I want, only that personality will be there. If the person is not happy, definitely he cannot serve. The basic requirement to serve is the person should be happy. Only when a person is happy, then only he shares his happiness with others, and he can reduce the karma of others, or otherwise he can share whatever he has got. If the person is unhappy, he gives his unhappiness to the other person. So ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. The more love we pour into the service, the more life we give to the guardian angels, the longer, therefore, will he live to encourage and to protect. Always, guardian angels are giving us encouragement and they are protecting also in whatever the service that we are doing. We should not imagine that they alone serve, whose acts of service are seen with physical eyes. Some of the greatest acts of service are those which no one sees. There are innumerable services which no one can really see. But we think, because we know only that much, what is tangible only we think and we recognize. Only those are all the not acts which only physical eyes can see. The person is doing like this, that is visible. Invisible helpers are also there. Invisibly, every moment we are getting lots and lots of support and protection also. If we postpone, abhi Leela ji ne kaha, if we postpone an act of service until tomorrow, we may have lost an opportunity to serve. For that particular act may not be needed tomorrow and has not been performed today. जो भी हम लोगों को मौका मिला है, so whatever the opportunity that we get to serve, we have to serve right now, today itself, and the present moment. So do it and finish it today itself, or now itself. Finish whatever is required. That is the real service. If we postpone, service itself is free. If we postpone tomorrow or day after tomorrow, means that is nothing but otherwise laziness. So service means it should be immediately, not postponing. Instantaneously one has to serve. So one of the most neglected acts of service is that of paying deliberate attention to each person who comes to visit us. Half of the act of service is over when we have listened with interest
to what that person has to say. That listening is very, very important. That itself is 50% of the action we have done. And in between, we are not supposed to say anything, because when the other person is telling, our mind itself is chattering. That should not happen. We have to listen completely, wholeheartedly. Then the act of service is over. Many people are willing and able to serve somewhere. We are able to serve somewhere, but how many are willing and able to serve anywhere? Somewhere is different from anywhere. Right from our founder presidents, H.P. Blavatsky or H.S. Alcott or Anniebesant or C.W. Leadbeater or G.S. Arundale or C. G.NAGARAJA are our quotes. All have come and stayed at Adyar and they have served. Wherever they serve, it's not the thing. Where the services of them is required, they have come all the way and they stayed there and they have rendered their services. And then again he says, as beautiful flowers are found in barren places, so is the most beautiful service that which is rendered in times or places of greatest need. These days we are seeing, we are listening, earthquakes are happening, cyclones are happening. So where the greatest services required means to them. So we have to serve in whichever the place, in whichever the country, and in whichever the time is. Whatever we have, let us share and let us render our service. As even a little flame shines brightly in surrounding darkness, so does a little act of service shine out clearly amidst surrounding selfishness. Because everywhere that selfishness only is there. Only service requires only unselfishness and love. And we have to do our regular duty and then only we are entitled to serve. These are all the basic things which one has to understand. If we are unable to discover an opportunity for service where we are at present, we will be unable to discover them in the place in which we would like to be. This is very, very beautiful and it's very meaningful also. If we are unable to discover opportunity for service where we are at present, wherever we are, we have to get an opportunity, because once we finish all our duties, then we will be eagerly waiting that hint we will get. Then we can serve. So that's why wherever we are, in whichever the position we are in, we have to serve. The person is most lonely and miserable in this world are those who, receiving many acts of service, offers none in return. There are so many people, they know how to take from others, but they don't know how to give. If they are in need means they ask and take the service. If the other person is in need means they doesn't want to serve. It should not happen in that way. Because if they behave in that way, it's very, very miserable and they'll always be lonely. They cannot be in the group. Service in the physical world is action. Because all of us knows very well, in 3 planes and in our 3 bodies, we act. We are living in 3 bodies as per our theosophy. In physical world, it is known as action. We will act. In emotional level or in emotional body, we give sympathy or compassion. In mental world, it is known as understanding. If we understand, then we can serve. Service, nothing but in action. But we can sympathize also. This listening is also sympathetic listening. So in all the planes, always we can serve. The best key with which in the early morning to unlock the storehouse of happiness for the day is some little act of service, eagerly and lovingly performed. So the service starts early in the morning. We should get up with total happiness. Service is like mercy. Twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes.
The person who gives or the person who takes, it gives blessings. The knowledge of self within is gained through the service of the self without. We are all seeking. What is that we are really seeking means the knowledge of the self. So the knowledge of the self is gained. Self within is gained through the service of the self without. So selfless service is the main thing. The truest acts of service are those which are performed instinctively. Nobody should tell. It has to come naturally. Wherever we are, whenever it is required, and we will do naturally. And there is no question of burden. There is no question of I am doing or you are taking. All those things will not be there. Service is the expression of the quality in harmony, our duty to our surroundings. Then what happens? Peace automatically will come. When the peace is there, harmony is there, what else is required? Nothing else is required. God records all acts of service. We men or women know only those which we can understand, and at the same time, we are not small, and which we approve. All the service or all the acts we will not approve. Why this? Why that? All those things we question. It is not so. The acts of service of many people have their origin in their customs, in our religion or in our customs, all these things. But to Theosophical Society members, our origin lies in love. Our origin lies in love, not in the custom. The cry of need is suffering. The cry of service is love. The cry of need is suffering. The cry of service is love. See how nicely it has been written. We do not know more than others unless we love, but therefore serve more than others automatically. The worship of God lies in the service of His world, because it has been created by Him, and if we serve, we are serving God Himself. True devotion is that which serves, not that which clings. We should not cling to anything. That is not true devotion. True meditation results in an added power to serve and in a decreasing adoption in our own personal progress. If we meditate, it has to give strength to serve. That is Shreya. If we meditate to gain something to our own self means Preya. That is for personal growth. That Preya should not be there, only Shreya should be there. People who express dissatisfaction with the manner in which their services are recognized have not yet learned what true service really is. Because we expect and we are not even happy. So people, they express dissatisfaction. They have not recognized me. I am doing so much of service. So my name should be there on the fan. She has donated. She has done this. He has done that. All those things. No name, fame, nothing. That dissatisfaction should not be there. That want of recognition should also be not there. Because if all these things are there, means they have not understood what real service is or true service is. Be careful to see that our acts of service surpass our promises. If no true act of service, the performance of which prevents us from fulfilling duty. So we have to give first priority to our duty, then to the service. People who feel that there are no services for them to perform often forget that the existence of animals and plants. In Karnataka, there is one lady, Salu Marada Timmakka. She planted n number of trees. That much she knew. So she served. There are lots and lots to serve to animals. My friend, recently I met one friend. She said, I'm keeping 4 dogs at home, but I feed 20 dogs in the street.
So animals and plants are also required our services. We can do. We should not think that I don't have any work to do. I need not serve. All those things are not there. One of the rarest act of service is to refrain from judging a person unheard. We judge people without even knowing, without even hearing anything about him or anything from him directly. We judge people. That should be the main thing that we should not do. We have to refrain. We have to stop. We should not do all those things. Our illnesses help us to understand that act of service exists as much in the attitude of the mind as in the attitude of the body. In case if we are ill and hospitalized and or otherwise if we are bedridden, then we will definitely understand what is the act of service. So let us serve at all time without expecting any fruit, and in all the planes let us go on serving, because the real service lies in each and everything. There is no one in the world who does not need something, and there is no one in the world who cannot give something. So with wholeheartedly, let us give something of ours to the service of the world. Thank you. Thank you so much. You also completed in right time, and this gives us, at the end, it will give us more time to go on this. Thank you so much. And now, Chaitra, please go ahead with your Kannada version. You can Okay. just keep the camera up. On this up. Yeah, that's good. Thank you. Okay. Please go So, ahead. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಆದರ್ಶ ಪ್ರತಿಫಲವೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು. ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆದರ್ಶ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಲ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದಷ್ಟು ರಕ್ಷಕ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವತೆಗಳು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ಹಾಕ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ರಕ್ಷಕ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆಯ ಕೆಲವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾರು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾಳೆಯವರೆಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೂಡುತ್ತಾ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತರ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಯ ನಾಳೆಗೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಅದು ಅವಸರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡೋದಲ್ಲೇನು ಸೇವೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅವನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಎಲ್ಲೋ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯಾವ ಸೇವೆಯಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೂವು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸೇವೆಯು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವಾಲೆಯ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹೊಳೆ ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಲ್ಲಿ, ನೀವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸೇವೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಏಕಾಂಗಿ ಮತ್ತು ದುಃಖಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕ್ರಿಯೆ ಆತರ ಆದ್ರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿನದ ಸಂತೋಷದ ಉಗ್ರಾಣ, ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಈ ಸಂತೋಷದ ಉಗ್ರಾಣದ ತೆರೆಯೋ ಬೀಗ ಉಗ್ರಾಣದ ಬೀಗನ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ ಉಗ್ರಾಣವನ್ನ ನಾವು ತೆರೆಯಲು ಅದೊಂದು ಬೀಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇವೆಯು ಕರುಣೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ಸೇವೆಯಿಂದ 2 ತರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೊಡುವವನಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಡೆಯುವವನಿಗೆ. ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವು ಹೊರಗಿನ ಸೇವೆ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೇವೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತರ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಜೊತೆ ಅದು ಇರಬೇಕು. ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಲವು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತರ ಸೇವೆಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಕೂಗು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸೇವೆಯ ಕೂಗು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಹೊರತು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದವರು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಅವನ ಲೋಕಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ಅಂಟುಕೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ದು. ನಿಜವಾದ ಧ್ಯಾನ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯೂಶಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆತರ ಅಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜನರು ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ದಾಗ ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸೋದು, ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ತಡೆಯುವುದು ಇದು ಸೇವೆಯ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮನೋಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಎಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much. Right on time. And Leela ji, please go ahead with your second half. Thank you. सेवा का सही प्रतिफल सबसे पहले अधिक प्यार करने की शक्ति के रूप में आता है, और यही शक्ति हमें और आगे सेवा करवाती है. जो प्रसन्न है वही सही माने में सेवा करता है. खींच कर गुस्सा करके ऐसा सेवा बिल्कुल नहीं है. वो जितनी प्यार की शक्ति से आप सेवा करेंगे वही स्थायी है और दूर तक जाएगी. ऐसा ना सोचें कि जिनकी सेवाएं हम आंखों से देख पा रहे हैं वही सेवक है. ऐसे बड़े बड़े सेवा कार्य होते रहते हैं जिन्हें हम फिजिकल आई से नहीं देख पाते हैं. जब कोई भी सेवा कार्य है और आपने दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया तो आपने सेवा का एक अवसर गंवा दिया जो शायद फिर कभी नहीं मिले. सेवा कार्य जब कई लोग आते हैं तो कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और हम उसको सहेज नहीं पाते. तो अपनेपन से और प्यार से बात करने से बहुत सारी उलझने स्वयं सुलझ जाती हैं. बहुत से लोग कहीं कहीं सेवा दे पाते हैं, पर ऐसे कितने लोग हैं जो कहीं भी सेवा के लिए तैयार होते हैं. जैसे सुंदर फूल वीरान जगह पर भी फूलते हैं, इसी तरह उस सेवा का असर है जो किन्हीं खास स्थितियों में मिलती है. जैसे एक छोटी सी बत्ती आसपास के अंधेरे को समाप्त कर देती है, इसी प्रकार समय व जगह पर मिली मदद है. जिस समय आप जहां हो वहां मदद का अवसर है और आप नहीं कर पाते और अपनी जगह ढूंढते हैं तो आपको वो जगह कभी नहीं मिलेगी. वह व्यक्ति बहुत अकेला और दुखी है रहेगा जिसे बहुत सेवा के अवसर मिले पर सेवा कर नहीं पाया. सेवा दुनियादारी के लिए काम है, एक्शन, जैसा बताया. भावनात्मक जगत में दया है और मानसिक जगत के लिए समझ है, अंडरस्टैंडिंग. पूरे दिन की प्रसन्नता के लिए उत्सुकता व प्यार से यह एक छोटा सा सेवा कार्य कुंजी के समान होता है. हैप्पीनेस की कुंजी फॉर फुल डे. सेवा एक ऐसी सुखद अनुभव है, सेवा एक ऐसा सुखद अनुभव है जो देने वाला और लेने वाला दोनों को मिलते हैं. इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, टू बी वेरी फ्रैंक. सही सर्विस समानता है. सेवा और ड्यूटी किसी प्रकार का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट लीव योर ड्यूटी बिकॉज ऑफ कि आपको वहां पे जाके सेवा करनी है इसलिए आज मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरा वो बात नहीं है. ईश्वर सब रिकॉर्ड करता है, आदमी वही रखता है जो वो समझता है और देखता है. लोग सेवा को अपने रीति रिवाजों से जोड़ते हैं, ठीक है, उनके, आई डोंट क्रिटिसाइज इट, इट डजंट नीड टू बी क्रिटिसाइज, रेदर जोड़ कर रखते हैं. पर सेवा का उदय, जो रियल सेवा का उदय, वो तो प्यार है. जरूरतमंद चिल्लाता है, सेवक दुलारता है. आप दूसरों से अधिक नहीं जानते, आप दूसरों से अधिक जानते हैं. ये आप तभी प्रूव कर सकते हैं जब आप अधिक प्यार करते हैं और उस अधिक प्यार के पावर से आप अधिक सेवा कर पाते हैं. ईश्वर की पूजा उसी की बनाई हुई विश्व की सेवा है. सही समर्पण सेवा है. पकड़े रखना नहीं, छोड़ना ऑल्सो इज सेवा. मेडिटेशन सही माने में शक्ति देता है और अपनी तरफ से ध्यान हटाता है, तो आप ज्यादा सेवा कर पाते हैं. जो ये सोचते हैं कि उनकी सेवाओं का मान्यता नहीं मिली, वे सेवा का सच्चा मतलब ही नहीं समझते हैं. आपके सेवा कार्य जितना आपने सोचे हैं उनसे अधिक होना चाहिए. सेवा का सच्चा कार्य वह नहीं है जो आपको अपनी ड्यूटी करने से रोके. जो सोचते हैं कि उनके लिए सेवा का कोई काम ही नहीं है तो वो भूल जाते हैं कि ये पशु, प्लांट्स हमारे आजू बाजू कितने हैं, बहुत कुछ करने के लिए है. किसी को भी बिना सुने उनके बारे में कोई ओपिनियन न बनाए.
सेवा का कार्य और मंशा, ये सब हमारे आसपास हमेशा है, जिसका भास हमें इमरजेंसी में होता है। इमरजेंसी जब रहती है तो जैसे बीमारी है और दूसरी आपदाएं हैं, उसमें सब कितने हेल्पफुल एटीट्यूड एंड एक्शन दोनों से आते हैं। आई थिंक इट्स ओवर। जी, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। धन्यवाद। जी जी, आप बने रहिए, मैं दूसरे वक्ताओं को भी लेकर आता हूँ। अपना वीडियो चालू रखिएगा। चैत्रा जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। थैंक यू। और सेवा की किसी तरह देखें तो एक इनडायरेक्टली तीन मूर्तियां यहाँ पर हैं। मैं सबसे पहले तीनों का परिचय एक के बाद एक देना चाहूंगा। ये मैंने सोचा कि इस बार मैं जब सब लोग तीनों इकट्ठे हो जाएं अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त, तब मैं परिचय दूं। सबसे पहले आज की वक्ता जो है संध्या जी, ये बेंगलोर से, कर्नाटका से हैं और काफ़ी एक्टिव हैं थियोसॉफी में। और उन्होंने उड़ीसा, भोवाली, नोडिया और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर अपनी भाषण और उससे संबोधन किया है। और इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हमारा होता है उसमें वे 3 बार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी रही है। और उसी तरह से उनका एक एम है कि थियोसॉफी को फैलाना। थियोसॉफी मतलब एक तरह की सेवा है, तो वो भी सेवा को फैलाती है। दूसरी हमारी जो आज की वक्ता थी वो हमारी थी चैत्रा जी। और चैत्रा जी अभी अभी अडियार में जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ वहाँ मिली थी। और पहली बार वो उन्होंने यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट किया है ट्रांसलेशन इंटरव्यू करने का, तो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत खूबसूरती से किया। और उनका बैकग्राउंड ये है कि वो बी हैं, एमटेक हैं और कंप्यूटर साइंस की इंजीनियर हैं, लेकिन उसी में वो पीएचडी करना चाह रही है और उसी में अभी संलग्न है। बीच बीच में आपने मधुर आवाजें सुनी होगी, वो उनकी छोटी सी बिटिया है ना आपकी, ये भी वहां पर थी थियोसॉफी में। और मैंने इसके पर जिक्र किया कि इनके जो ग्रैंडफादर थे, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी इन लॉज, वो ईएस के मेंबर थे 50 वर्षों से थियोसॉफी। तो मेरे ख्याल से ये छोटी सी गुड़िया जो पास में बैठी है, ये अगले 50 वर्षों तक थियोसॉफी को इनके परिवार के साथ जोड़े रखेंगी। तो ये भी एक प्रकार की सेवा है जो शायद ये बहुत ही समय से, पूर्वजों से करते आ रहे हैं, पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। और उन्होंने थियोसॉफी सोसाइटी में इंटरेस्ट लिया और अलग अलग डिसिप्लिन से वो थियोसॉफी में बचपन से ही जुड़ी रही, लेकिन ऑफिशियली मेंबर वो थोड़ा दिनों पहले ही बनी। और हर संडे को मीटिंग वगैरह अटेंड करती रहती है। और आज की इतनी अच्छी वक्ता जो उन्होंने बोला है, उसके बाद आपको बार बार त्रिवेणी पर भी हम आमंत्रित करते रहेंगे। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू। और तीसरी जो हमारी वक्ता है उनके बारे में तो क्या कहिए, वो तो एक सजीव जीती जागती सेवा की मूर्त है। मैं जब उनके बारे में पढ़ूंगा तो मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। लीला जोशी जो डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एक सोशल वर्कर हैं, जिन्हें की ट्राइबल जो वुमेन हैं, ट्राइबल हमारी महिलाएं हैं और जो टीनेज गर्ल हैं, जो मतलब जस्ट टीनेज में पहुंची है, उनको जो सफरिंग होती है एनीमिया से, वो पूरे रतलाम डिस्ट्रिक्ट में ये मेरे ख्याल से 10 से 15 वर्षों से बिना कोई आशा रखे सेवा कर रही। और उन्हें कितने गर्व की बात है हमारे लिए कि उन्हें कहा जाता है कि वो मदर टेरेसा है मालवा रीजन, और उन्हें पद्मश्री से अवार्ड किया गया 2020 में। एक छोटी सी तस्वीर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो याद ताजा हो जाए। शायद आपको दिख रही होगी तस्वीर। तो ये वो क्षण है जब मतलब उन्हें इस हाईएस्ट उससे नवाजा गया। और ये उस वक्त के राष्ट्रपति जो हमारे थे, रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने उन्हें इसे दिया। और आदिवासी अंचलों में जो महिलाओं और बेटियों को वे निःशुल्क इलाज देती हैं और आज तक देती आ रही है। अभी मैंने जब फोन किया तो बोले नहीं, मैं सुबह तो यहाँ जाके आऊंगी, ये करके आऊंगी, तो शाम को ही मिलूंगी। तो इस उम्र में भी उनका ये सेवा भाव बिना किसी आशा के हो रहा है। तो संध्या जी, आपने जो आज स्पीच लिखी, मेरे ख्याल से इससे बड़ा अंत नहीं होगा कि हम 2 या 4 क्षण लीला जी को सुने
कि वो क्या सेवा करती है प्रत्यक्ष रूप से। लीला जी, ओवर टू यू। ये तो हटे। जी लीला जी। आपने इतना ज्यादा कह दिया, अब मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं रतलाम में हूँ। रतलाम एक आदिवासी जिला है। रतलाम में मैं रिटायरमेंट के बाद आई हूँ इन 1997। मैं रिटायर्ड इन 1996 और वहां पर मेरी मदर टेरेसा से भेंट हुई थी आसाम में। आसाम वाज माय लास्ट पोस्टिंग एज चीफ मेडिकल डायरेक्टर इंडियन रेलवेज की। तो आदिवासी वहां पर मेरी मदर टेरेसा से भेंट हुई थी और उन्होंने जो अभी हम कह रहे थे ना, ऊपर वाले की बात जो हम करते हैं हमेशा, तो उन्होंने एक फंक्शन में मदर टेरेसा से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेके कहा था कि डॉक्टर प्लीज डू समथिंग फॉर देम। वहां पे कुछ आदिवासी ग्रुप बैठे हुए थे और आई टेल यू, आई स्टिल फील दैट वाइब्रेशंस ऑफ डॉक्टर मदर टेरेसा मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स। तो वो दैट वाज द टाइम कि जब मैं असमंजस की, डायलेमा की स्थिति में थी कि वेयर टू सेटल आफ्टर रिटायरमेंट। माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स वर एडवाइजिंग मी फॉर सम मेट्रो सिटीज और मैंने इस तरह का कुछ इंतजाम भी किया था। पर मदर टेरेसा से मिलने के बाद सडनली इट केम टू मी दैट आई विल गो टू रतलाम। रतलाम इज माय बर्थ प्लेस। पर मैं बर्थ के बाद यहाँ से चले गए थे हम लोग, तो वापस कभी नहीं आए यहाँ पर। आई केम आफ्टर रिटायरमेंट ओनली। तो देन फ्रॉम 1997 onwards, रतलाम इज एन ट्राइबल मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पर एनीमिया बहुत अधिक है ट्राइबल्स में, अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी में। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये एक एक संस्था बनाई, एक ग्रुप बनाया एंड ग्रुप वाज मोस्टली ऑफ द रिटायर्ड पर्संस। एंड मैंने ये पाया कि रिटायर्ड पर्संस, दे आर मेनी पर्संस हु वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी बट दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू गो, वेयर टू गो, कैसे स्टार्ट करें। तो इट्स सो नाइस, कोइंसिडेंटली हम सब मिल गए और देन वी स्टार्टेड फ्रॉम 1997 ऑनवर्ड्स। हमने कैंपिंग, हेल्थ कैंपिंग करना शुरू किया फॉर प्रेग्नेंट मदर्स। वी यूज टू फॉलो देम और 4-5 4-5 6 ग्राम हीमोग्लोबिन माताओं का, गर्भवती माताओं का होता था, जबकि WHO के पैरामीटर्स के हिसाब से इट शुड बी minimum 12 gram percent. Anything below 12 gram percent, WHO says it is anemia. लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में, हमारे हालात में 10 to 11 ग्राम परसेंट होता है, तो हम सेटिस्फाइड हैं कि सब ठीक ठाक हो जाएगा करके। जी। तो हमने ये कैंप लगाना शुरू। मुझे टाइम का बता देना, व्हेन आई हैव टू स्टॉप आई विल स्टॉप बिकॉज देयर आर। नहीं प्लीज बोलिए। प्लीज बोलिए आप आराम से ले सकते हैं। आज हम थोड़ा जल्दी खत्म हुए हैं, आपके पास 100% 2-3 मिनट तो है। तो हम हेल्थ कैंप्स लगाते थे माताओं का। वी यूज टू फॉलो देम। आई पर्सनली फील दैट वन टाइम एक्शन इज एज गुड एज नो एक्शन। अनलेस अंटिल वी फॉलो इट वी सॉल्व द प्रॉब्लम। खाली एक बार कुछ कर देने से काम नहीं होता है। तो देन वी यूज टू फॉलो देम अप टिल एनीमिया इज क्योर्ड। वी यूज टू फॉलो द हाई रिस्क केसेस, जाके सब कुछ करते थे वहां पर। एंड आफ्टर फ्यू इयर्स वी रियलाइज दैट ये जो प्रेग्नेंट मदर्स, they are okay, their anemia increases during pregnancy but they are already anemic, so we have to go back to girls, क्योंकि वो उसी एज से, कम एज से ही दे आर एनीमिक। So we started health checkup camps for the schools, hemoglobin raising in a health checkup camp for the school by the name of 12 by 12 by 12, meaning thereby that hemoglobin of every child should be 12 gram percent by the age of 12 years, or by the time she or he reaches, if it is not possible by 12 years, usually it is not possible, by the time they reach to class 12, 12 by 12 by 12। तो हमने सारे बच्चों का, मेनली गर्ल्स का हीमोग्लोबिन राइज करने की कोशिश की, गर्भवती माताओं की केयर करने की। एंड इंसिडेंटली
it had a very beneficial, positive effect, and maternal mortality rate in these anemic patients is very big, very major cause. Anemia is a very major cause of our मातृ मृत्यु का. तो हमारी मातृ मृत्यु दर कम हुई, डिस्ट्रिक्ट की मातृ दर इतनी कम हुई, और इवन द न्यूनेटल डेथ भी कम हुई. दिस आई एम डूइंग सिंस 24-25 साल हो गए मुझे करते हुए, 1997 ऑनवर्ड्स, एंड वी आर डूइंग. अभी थोड़ा कम हो गया. अभी ड्यूरिंग कोरोना हमारा कैंपिंग कम हुई. वी आर नॉट गोइंग आउट, नॉट कैंपिंग. तो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने अपनी ऑल द ऑब्स्टेकल्स, एक बुकलेट लिखी, द ऑब्स्टेकल्स इन इरेडिकेटिंग एनीमिया. एक छोटी बुकलेट लिखी. छोटी सी बुकलेट आपकी अगर हो तो एक आध कॉपी मुझे भेजने का कष्ट करें. मुझे पोस्टल एड्रेस बता मैं देना, भेजूंगा आपको जी. बता देना. एंड ड्यूरिंग दिस पद्म अवार्ड अपने पीएम मोदी जी सबसे मिलते हैं, तो वो जब मेरे से मिलने आए तो मैंने कहा आपसे एक विनती करूं. उन्होंने कहा बोलो, मदर टेरेसा को कौन मना करेगा, ऐसा कहा उन्होंने. तो मैंने कहा ये मैंने कहा कि ये मैंने कुछ लिखा है फॉर एनीमिया इरेडिकेशन, जो प्रॉब्लम्स आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन द ग्राउंड. तो उन्होंने कहा लाओ देव, एंड आई फाइंड दैट मेनी ऑफ दोज सजेशंस हैव कम अप. आई एम रियली थैंकफुल टू हिम. और एक और बात, सजेशंस भी छोटे छोटे थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. जैसे हम स्कूल एडमिशन में बच्चियों का हमको मिलता है 4-5 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता था. तो बच्चियों का हम लेते हैं जाति सर्टिफिकेट, पिता का ये, और इनकम, इतने सारे सर्टिफिकेट लगाते हैं. व्हाई कांट वी हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ हीमोग्लोबिन आल्सो? क्या बात है. और अगर सपोज हीमोग्लोबिन कम है तो लेट द पेरेंट्स गेट ट्रीटेड, और 2-3 महीने में जब हीमोग्लोबिन ठीक हो जाए तो लाओ वो टेम्पररी एडमिशन दे दो, इसके बाद उनको परमानेंटली एडमिट करो. तो विल नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ ए पिक्चर कि हमको 4-5 ग्राम वाली बच्चियां मिल रही हैं. मुझे लगता है कि हमको औरों को भी सुनना चाहिए. दिस इज ऑलरेडी टू मच. थैंक यू सो मच. नहीं, बहुत बढ़िया लीला जी. और मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि मोदी जी की बात आपने इतनी बढ़िया बताई, जो भी सजेशन आपके और भी छोटे छोटे हों कृपया लिखकर जरूर भेजिएगा. मैं वो बुकलेट ही भेज दूंगी ना, 4-5-6 कॉपीज आपको. जी बिल्कुल. मुझे लगता है कि जो भी स्कूल में है या जो भी है उनको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साधारण सी बात है, कुछ बहुत ज्यादा लगता नहीं है. आप हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने चालू कर दिया, स्कूलों में, कॉलेज में. करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उसका हो. और संध्या जी, आपके विषय में 2 बातें थी कि एक तो ये था कि सेवा जितना करो उसका एक पावर होता है, तो मेरे ख्याल से हमें वो पावर लीला जी में दिख रहा है. अरे वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. ओके. और मेरे ख्याल से हम सब बहुत लाभान्वित हुए. और संध्या जी, बहुत अच्छी बात है कि आप ये सब्जेक्ट लेके आए. इफ यू वांट टू ऐड 2-3 लाइंस देन वी विल गो टू शिंदे जी, हर्षवर्धन जी और लोग जो हैं. प्लीज इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, अर्चना जी आप भी उसके बाद शेयर. Chaitra, I know Kannada, no? So Chaitra's translation is really marvelous. Really wonderful, because very, very nice. she is a really brave lady. Because when I called her, और मैंने लीला जी को भी फोन किया, लीला जी को भी वो पूरा पढ़कर सुनाया. उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको इनकॉर्पोरेट जितना करना है कर लूंगी. चैत्रा जी बोले कि नहीं, मुझे भेजो, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूंगी. क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम था तो वो चाहती थी कि वो एकदम कंप्लीट रहे. ये भी एक बहुत बड़ी मन से सेवा करने वाली बात है. थैंक यू संध्या जी, एंड थैंक यू चैत्रा जी, लीला Thank जी. you, Leela ji, for sharing your part of your life along with us. Really, we are very much honored. Thank you very much once again, Leela ji. Yes. And Taral ji, because of you, we are coming to know so many people directly. No, that's true. But when a subject comes, something happens that this particular person would do more justice to it when he or she is already doing it in the life. So that's how everything gets connected. Yes, Shinde ji, please go ahead. Well, I bring greetings and good wishes of Pongal from Chennai to all of you. Yes, thank you, sir. And I am really happy. Today's Triveni is really
it is a Sangam of Leela ji, Sandhya ji, and Chaitra ji. And I am happy that all the language I can understand. Yes. So yeah, I understand Kannada, Hindi, English, and they spoke very well. And I am inspired by, of course, Leela ji is the, as you said rightly, she is the Mother Teresa of our Theosophical Society, actually. Also. And Leela ji, just I got a thought now. You were speaking about the immunity, and the hemoglobin is the source of carrying the oxygen and immunity and all that. So when this topic is on the service, I just, being a professor of zoology, I remembered the function of the red blood corpuscles, which are loaded with the hemoglobin. RBCs. Red blood corpuscles are loaded with the hemoglobin. And what the red blood corpuscles serve to the human body is, it carries oxygen from lungs and distributes oxygen to each and every corner of the body. And not only that, after giving this oxygen to each and every corner of the body, it carries the whatever carbon dioxide is there, back. it brings and it gives out. So this is what a kind of service. And this service is the wonderful service which is our red blood corpuscle is doing. And if we really take some lesson to serve like this, taking and giving, give and take, sharing. So if we stop gossip, then our mental atmosphere will clear. If we stop our cruelty, which is going on in the nation, then human civilization will be benefited. And if we get through the superstitions, then we stop hindering the human progress. And there we start the human regeneration. So man is existed to serve, and he must serve like hemoglobin, what it is serving. I remember you just I gave this example. निस्वार्थ सेवा. Yeah. जी जी जी, बहुत बढ़िया. देखिए कहाँ से कहाँ सेवाओं को ढूंढ लेते हैं. हर्षवर्धन जी, आपके 2 शब्द, उसके बाद रमेश चंद्र गुप्ता जी पहली बार जुड़ रहे हैं. बहुत अडियार में मिले थे, खूबसूरत व्यक्ति हैं, वो भी 2 अगर वाक्य कहना चाहें तो कह सकते हैं. Very nice. I would like to congratulate Leela ji. First of all, we had one particular program which I translated that into English. You spoke very well during that particular Triveni program. Yes, so yes. again, this is the chance for me. And as that time was there when you had this PADMA award, and that particular function was there in Delhi. Correct. So we did a special program on that. Yeah. So I am really hopeful about this, and what you spoke about this subject which was taken up by SANDHYA Rani ji. I must congratulate SANDHYA ji, because this is really a wonderful subject. Yes. The highest ideal in life is to serve. Good. This is the maxim that is very well to be understood and to be followed. And whatever the attributes we have, the highest attribute is the service. And service encourages us, service inspires us, service makes us very honest, diligent, kind-hearted. Whatever we hope to do, only this is the base. So it is the base that we have to have in our life. So service before self is the most highest attribute. So whatever the subject matter is there, it's all right. And I must congratulate Chaitra ji for Kannada translation. Shinde ji told that he could understand Kannada. Yes, I could understand beautiful. 50%. Actually, I took some help of internet and all, and when Sandhya ji was telling, I corrected few things. Wonderful. And then, That's what you said also to me. That, don't worry, I'll correct when she will speak. That's really good.
So very Yes, yes. nicely Thank you, you sir. put that in Kannada also. So Yeah, I yeah. must congratulate you. And that particular sound of that little boy, little one that was there along with your speech, that was Yes. also very a ringing kind of atmosphere. I'm really very happy today. And I must congratulate you. And Leela ji, namaskar. Very, very, really, I respect you a lot. Here in Gujarat also, we have one discussion about you in one of our schools and what the work you had done there. That is also referentially mentioned in that way. So I'm very thankful to you. And really And, today I saw you and I'm very happy. All my good wishes to you, to Sandhya ji and to Chaitra ji. Thank you very much. Thank you, sir. Arjun Thank you. ji. Thank you. Quickly, I'll add two words that Leela ji, आप मुझे ये नहीं मालूम कि how much busy you are, but if you have any time away from this service, I would really once like to you to visit Adyar. Of course, we can arrange that tour. There are two schools which Theosophical Society runs there, and I think your experience of this thing can be of very useful to the students there, because I think Olcott School, Shindeji, if I am correct, serves, correct. yeah, it serves to the children who cannot afford education. So I think that's what you are also doing service to the people who can't even go close. Adivasis can't go close to the medical facilities rather than affording them. So here also, because twice, thrice I have been to Adyar and have visited Olcott School, I somehow feel the connection very strong. And maybe if I can be the mediator, I will be very happy. यस रमेश चंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, फिर विमल जी अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। हाँ जी। Sir, I am very thankful to all the speaker. Very good speech and very good knowledgeable things. I congratulate very much. Thanks. Thank you, sir. Yes, Vimal ji, please go ahead. Then if Sushma ji is there, yeah, go ahead. No, you are not. ये उसका है, डालिए बाहर। आज आप बहुत सारे यंत्रों के साथ बोल रही हैं विमल जी। तब तक सुषमा जी अगर कुछ कहना चाहें, दो चार शब्द आशीर्वाद। हेलो हेलो, हाँ, नमस्कार। बोलिए सुषमा जी। हाँ, पहली बात तो मैं तीनों वक्ताओं के प्रति ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ, और ये ग्रेटिट्यूड पे करना भी एक सर्विस है। हाँ, हाँ, दूसरी बात कि हम सस्टेन ही दूसरों के सर्विस के माध्यम से करते हैं, और वास्तव में किसी ने कहा है कि द प्लेटफॉर्म ऑफ सर्विस इज एज बिग एज द वर्ल्ड एंड इट इज नेवर ओवर क्राउडेड, गांधी जी का वक्तव्य। और दूसरी बात, द सर्विस वी रेंडर टू अदर्स इज रियली द रेंट वी पे फॉर आवर रूम ऑन दिस अर्थ। तो हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते। द सर्विस वी रेंडर टू अदर्स इज रियली द रेंट वी पे फॉर आवर रूम ऑन दिस अर्थ। तो ये तो हम सस्टेन ही दूसरों की सर्विस से करते हैं, और हमें लगता है कि हम ही जो है भौतिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से समृद्ध हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए उतना ही उपयोगी है। हम एक दूसरे की सर्विस के बिना हम रह ही नहीं सकते, और सर्विस के लिए दो जो एलिजिबिलिटी जरूरी है, संवेदनशीलता और सेक्रीफाइस। यदि हमें वो सेंसिटिविटी नहीं होगी तो हम वो अपॉर्चुनिटी को खो देंगे, और संवेदनशीलता होगी तभी हम, और सेक्रीफाइस का गुण हमें होगा तभी हम सेवा कर सकते हैं। तो बस यही, फिर एक शेर के साथ मैं कहती हूँ कि जब सर्विस जो है, जब आदमी की संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है तो वो कहता है कि अब तो गमे गैर का भी मुझ पे असर होता है, अब तो गमे गैर का भी मुझ पे असर होता है, कोई रोता है तो दामन मेरा तर होता है। हाँ, तो जब ये स्थिति आ जाए तब सर्विस जो है वो स्वाभाविक होती है, जीवन का एक हिस्सा बन जाती है, और हमको एज अ थियोसॉफिस्ट वैसा ही बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अवसर दिया आपने बोलने का। अरे हम लाभान्वित होते हैं आपके बोलने से, धन्यवाद आपको। यस विमल जी। Just want to say thank you to Taral, Munshi and team for the service they render every Tuesday. Amazing service. Thank you so much, Keshwar ji, Archana ji, Atul ji,
all of you come and you make such a nice, and like Sandhya ji said that we are getting to know more and more people thanks to this. So that is a great service that you're doing for the whole society. So thank you. Thank you, Vimal ji. Can I say something? एंड या अर्चना जी आप बोलिए ना, आपको कौन रोक सकता है? मैं तो नहीं रोक नहीं आप तो बिल्कुल नहीं रोक। एक तो तीनों तीनों विदुषियों को प्रणाम, बहुत ही अच्छा लगा तीनों की भाषा और विचारों के प्रभुत्व पे। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। मैं चूंकि मेरी दादी जी के साथ पली बड़ी हूँ और वो वैष्णवाइट थी, तो वैष्णव समाज में जो भी होता है तो हम पूजा नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, फल की सेवा कर रहे हैं, फूल की सेवा कर रहे हैं। कहीं भी वो भाव नहीं होता कि मैं पूजा कर रही हूँ। तो एक लाइन होती है। और इसमें मेरी दादी ने एक छोटी सी कहानी बनाई थी कि कृष्ण को वैष्णवाइट ज्यादा मानते हैं। तो कोई तो भी बड़ा यज्ञ था और कृष्ण जी सबका खाना हो गया तो सबकी जूठी पत्तलें उठा रहे थे। तो बोले अरे आप तो भगवान हो, आप क्यों जूठी पत्तलें उठा रहे हो? बोलते ये सेवा नहीं करूंगा ना तो ये मेरा धर्म सफल नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य ये था, मेरी दादी कह रही थी कि हर एक चीज सेवा होती है तो ही उसका फल, भले वो भगवान कृष्ण हो, उन्हें भी करनी पड़ती है। तो ये छोटी सी बात याद आ गई तो मैंने सोचा शेयर कर लूं। वाह वाह वाह। और आप जो हमारे नियमित दिन भर में 1-1.5 लीटर चाय बनाती हो, वो भी तो एक बड़ी सेवा है। उसके बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं। ये एक मजाक था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और अतुल भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर किसी को और को कुछ ना कहना हो, चैत्रा जी, संध्या जी, कुछ और कहना हो, अथवा हम फिर समापन की ओर चलते हैं। मैं देख रहा हूँ कि रोहित जी भी आए हैं यहाँ पर। कुछ साथी लोग जो मिल गए थे वो कानपुर से हैं। रमेश चंद्र जी भी वहाँ मिल गए थे। और काफी लोगों ने आज कहा है कि वो अगली बार से और जुड़ेंगे, और अगली बार हम एक और इंटरेस्टिंग विषय लेके आएंगे, और वो हो सकता है कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, और शायद इस चीज को आगे सार्थक करें। तो अतुल, हाँ, यस संजय जी, प्लीज गो अहेड। मदर तेरेसा के बारे में याद दिलाई ना। मदर तेरेसा की एक कोट है, गिव योर हैंड्स टू सर्व एंड योर हार्ट टू लव। क्या बात है, गिव, फिर से बोलिए। गिव योर हैंड्स टू सर्व एंड योर हार्ट टू लव। वाह वाह वाह, मदर तेरेसा। बिल्कुल। हाथों को सेवा में लगाइए और दिल को प्रेममय बनाइए। बहुत बढ़िया, क्या बात। तो चलिए अतुल जी, गो अहेड प्लीज। કેશવરબેન શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું। કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે। तो चैत्रा जी, जैसे आप बोल रही थी तो एक छोटी सी बच्ची की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। केशवर जी जब बोलेंगी तो भी एक बच्ची की आवाज सुनाई देगी, सुनिए। Yes, केशवर जी। ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಲಾ ಎದ್ದಿದಾಳ? ಹುಡುಗ ಗಂಡ್ ಮಗು ಮಾತಾಡಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ हाँ, ಚಿಕ್ಕ, ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ, ಅಭಿನಯ start? yes, yes, please go ahead. ಓ ಅಚ್ಚುಡಿ ಪಾಪ Yes, ಒಂದು ಸೇ ಹಾಯ್. ಹಲೋ. Hi. yeah, please, let's go ahead with the prayer. I'll start now. मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम्, न कर्णं न जिह्वा न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः, चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु, न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः, न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः, चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्,
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः। न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। धन्यवाद बहुत बहुत केशव जी। खूप धन्यवाद इसको सर। ये पूरे एक अलग जोन में डाल देता है अध्यात्म। तो हम अगले मंगलवार फिर मिलेंगे। अगले मंगलवार सोनल मुरली जी आ रही हैं अपना सब्जेक्ट लेकर, और वो एजुकेशन